angular strain rate, or that you can say that it is angular deformation. ठीक है, angular deformation. So in order to understand about the angular strain rate, we'll consider a two-dimensional fluid element. First of all, what is angular strain rate? Am I clearly audible to you? Yes, sir. Okay. Yes. So the angular strain rate or the shear strain, rate of shear strain, they are actually same. We have already defined what is shear strain. Okay. So the angular strain rate or the rate of shear strain is actually the rate of change of the angle between any two line elements which were perpendicular to each other at some previous time. Okay. So it is actually, let us suppose there is a fluid element, and so I'm going to draw a figure. Let us say we have this. Let us consider this two-dimensional fluid element. Two-dimensional fluid element ABCD. ABCD. So you can see that this angle is actually your 90 degrees. Okay. So AB and AC are perpendicular to each other. Now, if after some time this element deforms and this angle changes, so that change is actually defined as the angular deformation. Okay, so that is that the rate of change of the angle between any two line elements which were actually perpendicular to each other at some previous time. So that rate of change of the angle is actually known as the shear strain rate or the angular deformation rate. Okay, so what I'm assuming that there is a fluid element ABCD, and obviously we are considering a two-dimensional fluid element because we don't need to actually consider the three dimension this time. Okay, and let us consider that after in delta t time, it continuously deforms and takes a different shape. Okay, so it deforms and takes the shape of like this. Let us say, let me take a different color this time. This is P, Q, R, and S. This is the new shape of the fluid element. Okay, are you satisfied with this figure? First of all, that is the question. Will it be a parallelogram? Initially, the shape of the fluid element was ABCD, and the size was let us say delta X and delta Y. This was delta X and this was delta Y. Okay, and after some time, let us say delta T time, it continuously deforms and takes this shape PQRS. So the new shape is PQRS. The initial shape was ABCD. Now the question is how it has deformed. So
it has deformed and taken the shape of PQRS. So are you satisfied with this shape? Are you satisfied with the shape? देखो मैं तुमको समझा रहा हूं, मैंने इसको पहले भी बताया था कि when actually a fluid flows, let us let us take an example of fluid flow between two plates. Okay, so uh, let us suppose there are two plates, and in between two plates, actually, let us suppose there is some kind of fluid. So this is that control volume actually that you are considering. Okay, now suppose the upper plate starts moving with some velocity. So if this upper plate starts moving with some velocity, then in that case, what will happen? This fluid element will occupy a different shape. Okay, because of the viscosity, the upper layer will move, whereas the lower layer, because it is stationary, so it will not move. So in that case, the new position of the fluid element will be like this. So you can see what kind of deformation is there. So the new And we shape is defined just like a parallelogram. yes, and we defined it as shear strain in the beginning itself. ठीक है ना? Shear strain or angular deformation. Is that fine? पहले भी डिफाइन किया है ना? किए कि नहीं? Yes, sir. So the same thing is happening here, but here we are also considering deformation in this direction. In this figure, what I've drawn here, we are actually taking deformation. We are actually allowing to move the fluid in this direction only along the x-axis. Now, if you also allow the fluid to move in this upward direction or the y-axis, there will be also a deformation of this. So the new fluid element will be something like this. Is that fine? ठीक है ना? या कंफ्यूजन है? भाई इस फ्लूइड एलिमेंट पर जब तुमने स्ट्रेस लगाया तो ऊपर पे एक्स एक्सिस के अबाउट लगाया, तो एक्स एक्सिस के अबाउट लगाया तो ये स्ट्रेन डेवलप हुआ तुम्हारा, ठीक है, एंगुलर स्ट्रेन. एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन द एंगुलर स्ट्रेन रेट, नॉट इन द एंगुलर स्ट्रेन ओनली. ओके, सो ये हमारे पास मिला. अगर यही चीज तुम इस डायरेक्शन में स्ट्रेन लगाए होते तो क्या होता? इस डायरेक्शन में स्ट्रेन लगाए होते तो इधर भी एक डिफॉर्मेशन होता कि नहीं? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. So, yes, sir. So this figure is combined figure actually. What I've drawn as PQRS, this is a combined figure where actually you are having all the deformations. So along the x-axis as well as along the y-axis, all the deformations are there. So let us take that. This is your x-axis, okay, and this is your y-axis. So this is the situation. This is the situation. This is x. This is y. Okay. So let us call this. Let us call this angle. This angle as delta alpha, and this angle as delta beta. Okay. So what about this angle? What about this angle? What is the value of this? What is the value of this? 90 minus delta. So it is pi by 2 minus delta alpha minus delta beta. So actually we are interested in the rate of change of this angle. Pi by 2 minus delta alpha minus delta beta.
So we are interested in this because what we defined the uh, angular deformation rate by the angle between the line elements which were perpendicular to each other at previous time. So angle between the line elements, these line elements PQ and PS, these were actually perpendicular to each other in the beginning. Now after deformation, the angle is pi by 2 minus delta alpha minus delta beta. So actually we are interested in this angle. This is actually your angular deformation. Right. Okay. So so whatever I've explained here, let us write down first. Uh, let us consider a fluid element ABCD. Let us consider a fluid element, and you might be thinking that why we have not drawn this parallelogram at the point A, taking the point A, just to ensure that actually there may be some linear deformation also. Are you getting this point or not? There may be some linear deformation, and due to that linear deformation, your position will actually change. So that is why we have chosen a different point P rather than choosing the original point A. So we have completely shifted the figure. Is that fine? So let us consider a fluid element ABCD. Fluid element ABCD, and let in delta t time it continuously deforms. It continuously deforms and takes the shape PQRS. So we are interested in this figure in this angle between PQ and RS. Okay. Now the question is, this angle is actually pi by 2 minus delta alpha minus delta beta. So that can be obtained if you can find out delta alpha and delta beta. So let us now. We are actually now interested in the finding the values of delta alpha and delta beta. Is that fine? So our aim is to find delta alpha and delta beta first, so that after finding this we can find out pi by 2 minus delta alpha minus delta beta. Okay, so so dimensions of the initial dimensions were delta x and delta y. Now actually we are in, let us consider this. So draw perpendicular, let us say draw perpendicular QM on the x-axis. So this is your right angle triangle, and in this triangle PQM or PMQ, you can actually find out delta alpha. But for that, actually, you need the value of QM and you need the value of PM. So if you can find out PM and QM, then possibly you can find out the value of this delta alpha in this right angle triangle. Okay. So how can you find out QM? Can you tell me? So what we have done actually, we have draw perpendicular QM from Q to x-axis. Okay. So first we are finding out QM. So in order to find out QM,
let us say this is n. Let us say this is n prime or n dash. Okay, and then let us say this is O prime. So if we can find out n prime and O prime, and if we subtract n prime with O prime, you will actually get QM. Okay, so our next aim to is find out uh, n prime and O prime. So what is the value of O prime? Is there anyone who can tell me? Anyone? What is the value of O prime? Sir, y component velocity into time. O prime is equal to how much? देखो जो जो फ्लूइड एलिमेंट ए पे था वही एक्चुअली शिफ्ट होकर ये शेप बनाया है, ठीक है ना। एबीसीडी जो था वही शिफ्ट होकर ये बनाया है। तो किस डायरेक्शन में ये जो ओ प्राइम है ये किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, बताओ। सर वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट है। कितने टाइम पे है? डेल्टा टी टाइम पे है। यस सर। यही हमने अज्यूम किया ना कि जो इनिशियली एबीसीडी था शेप, और आफ्टर डेल्टा टी टाइम इट डिफॉर्म्स एंड ऑक्युपाइज द शेप ऑफ पीक्यूआरएस। सो ओ प्राइम विल बी एक्चुअली इक्वल टू v into delta t. Is that fine? And what about n prime? What is the value of this? अब तो तुमको इजी होना चाहिए भाई। यहां पे वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में u था, y डायरेक्शन में v था, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इसलिए उसका हमने डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया। यहां पर बताओ x डायरेक्शन में क्या है, y डायरेक्शन में क्या है, b पॉइंट पर। What is the velocity what is the velocity in x direction and y direction at b? U plus del x, y plus v plus del y something. हाँ, u x plus del x, ठीक है ना, in the x direction, and in the y direction what is that? V y plus del y. y plus delta y कहां से हो गया? डेल्टा y तो ऊपर जाओगे तब ना, इंक्रीमेंट तो x डायरेक्शन में ही हो रहा है ना। अभी हम b पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो b पॉइंट पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी vx plus delta x. Is this fine? बताओ भाई। इन जनरल यू वी डब्ल्यू सारे एक्स वाई जेड तीनों के फंक्शन होते हैं। हम देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। वाई डायरेक्शन में तो तब इंक्रीमेंट होगा ना जब ए से सी पे आएंगे, तो ए से सी पे थोड़ी आ रहे हैं, ए से हम बी पे जा रहे हैं, तो इंक्रीमेंट किस पे हो रहा है,
एक्स डायरेक्शन में ही इंक्रीमेंट हो रहा है ना, पहले यहाँ पर एक्स का फंक्शन था, अब एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है, वाई तो कांस्टेंट रह जाएगा. So this was the velocity here, and in delta t time how much it has moved, so you have to multiply with this with delta t. So if you simplify this, you actually get del v sorry vx plus del v del x delta x plus and so on. So this is delta t. So therefore now you can now find out your qm. What is qm? Qm is n prime n minus o prime o equal to you have vx plus del v del x delta x plus and so on delta t minus v delta t. So this vx and this vx will get cancelled out, and what are you left with? You are left with del v del x delta x delta t plus the small terms. Okay, so qm निकल के आ गया. What is pm actually? What is pm? So what was initial pm? Now pm equal to, can you tell me what was the initial value of pm? Sir, delta x. Yes, delta x was the initial value of pm. Now in delta t time, you can see that there is some deformation. Okay, there is some deformation. So how much how much you can expect pm to be? Initially ये delta x था. Delta x is already a small quantity. Okay, so what could be the pm? Because you can see that pm is exactly parallel to AB. Okay, and AB length was actually delta x. I'm now looking for pm length. So what could be the value of pm? Sir, PM would be a bit less than delta x. So actually, we can apply that tan of uh, tan of delta alpha is equal to Yeah, perpendicular upon base. in other words, actually we are interested in that tan of delta alpha. That is why we want pm. Yes, sir. That is also Yes, unknown. sir. Okay, so now what I am trying to say, that whatever is your pm, that is nothing but some delta x, okay, and plus some small order terms. So, higher order terms means some smaller terms in magnitude. Is that fine? That increment or decrement, whatever is there, that is actually very small, because delta x is already small. Are you getting this point or not? Yes, sir. AB is delta x. After deformation, it becomes pm. Okay, you can see that it is just a linear deformation. So there may be some change in the length, but how much that change may be, that change is actually very small, because delta x is itself very small. Okay, so if delta x itself is very small, in that case pm is going to be approximately delta x. So that is why I'm writing pm equal to delta x plus some smaller terms. So maybe higher order terms, very small terms, and so on. Okay. So if pm is your delta x, then now you can treat in this right hand triangle, angular triangle, क्या बोल रहे हैं, right angle triangle,
in triangle PMQ, you can now write down tan of delta alpha is equal to how much? Tan of delta alpha equal to, QM upon PM. okay, QM upon PM. That is del V, del X, delta X, delta T plus and so on upon delta X plus and so on. Now, so obviously, if you are, let us assume that now taking, yeah, when delta T tends to 0, what happens? Can you tell me? When delta T tends to 0, then obviously, if your delta T is very small, in that case, delta alpha is also very small, because delta alpha is the deformation in delta T time. So if delta T is very small, it is negligible. So delta alpha will also be very small, it will be negligible. And in that case, your tan of delta alpha, you can actually write down delta alpha. Any doubt? So what actually we are doing? We are taking uh, delta alpha limit delta T tending to 0. So therefore taking limit delta T tending to 0, we get delta alpha delta T equal to, this is limit delta T tending to 0. And what we will get from here? What we will get from here? We will get del V del X. So this quantity delta alpha delta T, this is actually denoted by alpha dot. So alpha dot is equal to del or delta alpha dot, whatever you want, you can write down delta del V del X. Is it okay? Any doubt in this? So we are actually uh, uh, we have actually obtained that delta alpha delta T. Okay, delta alpha upon delta T, which we are actually denoting by alpha dot. So alpha dot value you have obtained as del V del X. Similarly, you can see that alpha dot value is actually del V del X. Now similarly, if you want, you can think about this in this direction. At present, we have thought about X direction only. If you think about Y direction, then in that case, you will be able to get, similarly, you will be able to get beta dot. And what will be that? Beta dot value? Delta limit delta T tending to 0, delta beta upon delta T. So that is actually we are denoting by beta dot, and that beta dot will be equal to del U upon del Y. Is this okay? Any doubt? No, sir. So according to the, so what actually we have obtained? We have already obtained alpha dot beta dot. So the rate of deformation. Now the rate of deformation
shear deformation or angular deformation or rate of shear strain is defined as, मैं लिख देता हूं एक बार, is defined as the rate of change of the angle, rate of change of the angle between the line elements, which were perpendicular to each other, which were perpendicular to each other, okay. So rate of change of angle between the line elements which were perpendicular to each other. So now, therefore, now the change in the angle between the line elements is how much? Change in the angle, change in the angle between the line elements is equal to pi by 2 minus so it was your original, okay, पहले pi by 2 था, अब कितना हो गया? अब हो गया pi by 2 माइनस डेल्टा अल्फा माइनस डेल्टा बीटा, ठीक है ना? तो कितना चेंज हुआ? दिस माइनस दिस, सो दैट इज नथिंग बट डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा. So therefore, rate of deformation or rate of uh, shear strain, is equal to alpha dot plus beta dot. That is nothing but you have del v del x plus del u del y. This is the value of rate of shear strain. Okay, del v del x plus del u del y. So please tell me if you have any doubts in this rate of shear strain. सर वो जो हमने एन एन डैश का वैल्यू निकाला था ना, वो सर सही से समझ नहीं आया. हाँ बताओ. सर एन एन डैश तो सर वाई एक्सिस के अलोंग है ना. एन एन डैश, हाँ y वाई, एक्सिस के अलोंग है, एग्जैक्टली y एक्सिस के अलोंग है, इसीलिए तो हमने v कंपोनेंट लिया है ना. यस सर. लेकिन सर वहाँ फिर एक्स प्लस डेल्टा एक्स लेने का क्या मतलब हुआ, वो समझ नहीं आ रहा. x प्लस डेल्टा x एक्चुअली क्या है ना, तुम ये चीज नहीं समझ पा रहे हो. जैसे देखो, मान लो हमारे पास इनिशियल फ्लूइड एलिमेंट क्या था? a ए बी b, बी. ठीक है. यस. अब यहाँ पर जो फ्लूइड, मान लो कि तुम्हारे कंपोनेंट्स हैं a पर, लेटर से ये a है, तो यहाँ पर फ्लूइड कंपोनेंट्स जो है वो x डायरेक्शन में क्या है? ux, ठीक है. यस सर. और v डायरेक्शन में क्या है? y डायरेक्शन में vx. वी एक्स. यस सर. एक्चुअली u v w तीनों कंपोनेंट जो होते हैं वो x y z तीनों के फंक्शन होते हैं, अच्छा. यस ठीक है सर. ना. ऐसा नहीं है कि यस u सर. होगा तो वो सिर्फ x का फंक्शन होगा, b होगा तो सिर्फ y का फंक्शन होगा, ऐसा नहीं है. x y z तीनों के फंक्शन हो सकते हैं, वो मिलके बनते हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पर ये है कि जब a पर u है वो क्या है? ux है. b जो है मतलब y डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी कंपोनेंट वो vx है, वो y का भी फंक्शन है, ऐसा नहीं है सिर्फ x का फंक्शन है, y का भी है, ठीक है, और z का भी है. तो अब यहां से जब अब तुम इस फ्लूइड एलिमेंट की बात कर रहे हो, अगर यहाँ पर जो b पर पॉइंट पर है तो वो क्या होगा? वो u x प्लस डेल्टा x होगा और v x प्लस डेल्टा x होगा, होगा ना. यस सर. ठीक है. अब ये यस बोल सर. रहा है कि
सो ऑब्वियसली जब v कंपोनेंट है तो v कंपोनेंट के कारण डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? y डायरेक्शन में होगा। यस सर, वाई डायरेक्शन। और x कंपोनेंट के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तभी तो वेलोसिटी वेक्टर तीनों तीनों कंपोनेंट को मिलकर बनता है वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है। अब ये चीज है कि यहां पर v कंपोनेंट x था, इसलिए यहां पर जो v कंपोनेंट था वो vx था, तो इसलिए हमने o डैश p जब निकाला तो o डैश p, क्योंकि वो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन कितने टाइम में हो रहा है? वो हो रहा है डेल्टा t टाइम में, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने v डेल्टा t लिखा। ठीक है। क्योंकि ये जो यस सर। p पॉइंट है वो a के डिस्प्लेसमेंट से बना हुआ है, इनिशियल पॉइंट एक तो है ना, और यहां पर जो हमारा q पॉइंट है वो b से बन रहा है। ठीक है। तो b पर जो वेलोसिटी है वो क्या है? vx प्लस डेल्टा एक्स। यहां तो y का तो रोल आएगा ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली तुम्हारा जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा है वो तो x प्लस डेल्टा एक्स हो रहा है ना। वर्टिकल यस चेंज सर, समझ आ गया। वर्टिकल चेंज तब होगा जब तुम बीटा डॉट निकालोगे। समझे? यस सर। बीटा डॉट निकालने के लिए तुम जैसे मैं मान लो कि s से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, है ना। इस राइट एंगल ट्राइंगल को जब कंसीडर करोगे तब तुम्हारा वो y का फंक्शन तुमको लेना पड़ेगा, जिसके कारण डेल v बाई डेल वाई आ रहा है तुम्हारा, सॉरी y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ रहा है यहाँ पर, डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक यस है। सर। यस सर। अब इसमें देख लो, जब तुम ये वाला ट्राइंगल अज्यूम करोगे, तो ये वाला ट्राइंगल अज्यूम करोगे तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो x डायरेक्शन में हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? यस सर। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो x डायरेक्शन में हो रहा है। देखो c था, वो s आ गया, तो किस डायरेक्शन में बढ़ा? वो x डायरेक्शन में बढ़ा। ठीक है। यस सर। और a जो था वो p आ गया, तो a जो था वो p आ गया, तो वो भी x डायरेक्शन में बढ़ा। यस सर। एक्चुअली ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, तुम किधर से सोच रहे हो, कौन सा डायरेक्शन में मूवमेंट कंसीडर कर रहे हो। यस सर। मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल तुमको कंसीडर करना है उसके अकॉर्डिंगली तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो। जब ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करोगे तो तुमको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, ये वाला, यस सर। और तुमको ये पूरा वाला। ठीक है ना। तो ये यस जो सर। डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में है, ये भी डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में है। क्लियर है ना फिगर? यस सर। ओके। सो दिस इज योर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन रेट। अब हम लोग यहां से कुछ चीजें डिफाइन करेंगे, जैसे एंगुलर वेलोसिटी। सो वी डिफाइन द एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। सो अब ये बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी अगर इस फ्लूइड एलिमेंट का होगा तो वो किस डायरेक्शन में होगा, किसके अबाउट होगा, कौन से एक्सिस के अबाउट होगा? जेड एक्सिस के अबाउट। जेड एक्सिस के अबाउट, है ना। यस सर। तो जेड एक्सिस के अबाउट होगा, तो वी डिफाइन द एंगुलर वेलोसिटी विथ along z axis, और विथ रेस्पेक्ट टू z एक्सिस। ठीक है। या फिर अबाउट z एक्सिस लिख देते हैं, along से अच्छा है अबाउट। as so this is equal to half of alpha dot minus beta dot. This is definition. We define the angular velocity about z axis as half of alpha dot minus beta dot. So this is nothing but 1 by 2 del v del x minus del u del y। ठीक है।
Now we define the vorticity vector. The vorticity vector. Vorticity vector is defined as how do we define vorticity vector? Let us denote it by this symbol. Okay, let us denote it by this symbol. What is the symbol actually? Sir, ohm. ओम स्मॉल वाले को बोलते हैं, इसको शायद कैपिटल ओमेगा भी बोलते हैं, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. So this we generally use for vorticity vector. So this vorticity vector is actually curl of q, curl of q vector. So that is nothing but this. So curl of q means actually vorticity vector measures the rotationality in the velocity vector. तो तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि कर्ल जो है वो एक तरह से रोटेशनल रोटेशन देता है किसी वेक्टर का, ठीक है ना? सो vorticity vector is defined as the curl of q vector, means it measures the rotationality in the motion. Okay, so if you simplify this actually, then you can actually write down this as I j k del x del y del z, and q vector is actually u v w. ठीक है? सो अगर तुम चाहो तो तुम इसको कंपोनेंट वाइज भी लिख सकते हो. vorticity vector is equal to, so you have क्या, del w del y minus del v del z. This is your I cap plus del u del z minus del v del x j cap plus del v del x minus del u del y. This is k cap. Okay, so this is your vorticity vector, complete vorticity vector. You can see that whatever we have defined the angular velocity about z axis, this del v del x minus del u del y, this is nothing but the k component of this. Is that fine? ठीक है? So k component of this. So similarly, if you are taking a two-dimensional element and if you are talking about the rotation about y-axis, then this will be your angular velocity multiplied with half, ठीक है ना? And then again, if you are taking along x-axis, so this will be your angular velocity. So let us simplify the things. Let omega wx or omega x, omega y, omega z are angular velocities, along x, y, and z axis respectively. Then this vorticity vector is equal to 2 into omega x I cap, 2 into omega y j cap, 2 into omega z k cap. Is that fine? And, Yes, sir. and if you want this to be written as vector, you can write down this as 2 into omega vector, where omega vector is
omega x, omega y, omega z. So from here, actually, we get a relationship that vorticity is equal to 2 into angular velocity. Any doubt? Vorticity is equal to 2 into angular velocity. So vorticity actually physically measures the rotationality of the flow. सर Rotational, हाँ बोलो. सर वो जो मैट्रिक्स की बात आप लिखे हैं आईजीके के फॉर्म में, मैट्रिक्स नहीं लिखे हैं, डिटरमिनेंट लिखे हैं. इस डिटरमिनेंट, उसके बाद सर वो सेकंड टर्म में थोड़ा गड़बड़ है सर, देखिए प्लीज चेक. सेकंड टर्म में यस सर. डेल यू डेल जेड. ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू. यहाँ पर डेल डब्ल्यू डेल एक्स होगा ना, यही बोल रहे थे. यस सर, यस सर. हाँ ठीक है. So vorticity equal to 2 into angular velocity. Now the vorticity actually measures the angular velocity. You can see the rotationality of the flow is being measured by vorticity. So the fluid flow is said to be irrotational. The fluid flow, this implies the fluid flow is said to be irrotational. Means there is no rotationality. So if it is called irrotational if the vorticity vector is zero vector. So if the vorticity vector is zero vector, that means your each component omega x, omega y, omega z, each component is a zero component. Okay, or you can also say that is curl of q vector is equal to zero vector. Is that fine? Any doubt in this? Tell me if you have any doubt. So we have derived the angular strain rate. With the help of that, actually we defined the angular velocity, then the vorticity vector, and then using the vorticity vector, we are now defining the irrotationality in the motion. So when a flow is said to be irrotational, if omega, this capital omega or the vorticity vector is equal to a zero vector, or your curl of q is equal to 0. Now, so let us start. Let us continue from here, and a few points that I want to discuss here is actually, let us suppose that let us consider, let us assume, in fact, let us assume that the flow is two-dimensional and incompressible. Two-dimensional and incompressible. So if any flow is two-dimensional and incompressible, what is the continuity equation? The equation of continuity is given by for a two-dimensional incompressible flow. What is the continuity equation? बताओ भाई. MSc वालों बताओ. What is the continuity equation for a two-dimensional incompressible flow?
नहीं बताओगे? व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ क्यू जीरो, हाँ बताओ. डाइवर्जेंस ऑफ क्यू जीरो होगा. Divergence of q equal to 0. Yes, divergence of q equal to 0 is equation of continuity for incompressible flow, but you forgot to include the assumption that flow is two-dimensional. So if the flow is two-dimensional, then So del u by del x plus del v by del y equal to 0. yes. So the equation of continuity for a two-dimensional incompressible flow is del u by del x plus del v by del y equal to 0. Okay. Now, what actually we are doing? Let us define. Let us define a function psi, which is function of xy. Okay, let us define a function psi, which is function of xy, such that such that such that your del psi by del y equal to u and del psi by del x equal to minus b. Okay, so let us define any function psi, which is function of xy, such that del psi by del y equal to u and del psi by del x equal to minus b. Or in other words, you can say that in other words, you can say that u equal to del psi by del y and v equal to minus del psi by del x. Okay, what happens in that case? So if your u is del psi by del y and v is minus del psi by del x, and what is there in your continuity equation? In the continuity equation, you have del u del x plus del v del y. So del u del x करो इसको, ठीक है. तो del u del x करोगे तो क्या आएगा? del स्क्वायर साई del y del x del y, और del v del y करोगे तो क्या आएगा? माइनस del स्क्वायर साई del v del x, सॉरी del y del x. ठीक है. और मान लिया कि साई साई एक्स वाई जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है उनके. तो ये जो डेल स्क्वायर साई डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर साई डेल वाई डेल एक्स, ये दोनों जो क्वांटिटीज होंगे दोनों सेम होंगी. तो दैट मीन्स व्हाट? इफ यू चूज अ फंक्शन साई एंड यू डिफाइन इन दिस वे, then the equation of continuity is already or automatically satisfied, is automatically satisfied. I hope it is clear to everyone. The statement is clear to everyone. ठीक है ना भाई? कहने का मतलब ये है कि अगर तुम डेल यू डेल एक्स करो, यू तो यहाँ डेल साई डेल वाई है ना, तो इसको डेल यू डेल एक्स करो तो क्या आएगा? डेल स्क्वायर साई डेल एक्स डेल वाई. ठीक है. और डेल वी डेल वाई करो, डेल वी डेल वाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस डेल स्क्वायर साई डेल वाई डेल एक्स. और मान लेते हैं कि साई के जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूअस है, तो अगर वो होगा तो क्या होगा? ये दोनों तो डेल एक्स डेल वाई और डेल वाई डेल एक्स ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएंगी. तो इन दैट केस एक्चुअली व्हाट विल हैपन? डेल यू डेल एक्स प्लस डेल वी डेल वाई जब तुम ऐड करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा. ठीक है. तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने साई को इस तरह से डिफाइन किया है, इस तरह से चूज किया है, सच दैट u इज इक्वल टू डेल साई बाय डेल वाई एंड v इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाय डेल एक्स, then in that case equation of continuity gets automatically satisfied. Okay, and this function psi is actually called a stream function. Okay,
This function psi is called stream function. Is called stream function. Why it is called stream function? Because if you plot psi xy equal to constant, the graph of psi xy equal to constant for different constant values, you actually get the streamlines of the flow. Okay, and that is why this function is called a stream function. So we will continue this in the next class, and we will discuss about the stream function as well as the velocity potential also. Okay. So I hope today's class was clear to everyone. If you have any doubt, you can discuss with me. Okay. Roll number 1, Yes, sir. 2, 3, Yes, sir. 4, Present, sir. 5, Yes, sir. 6, Yes, sir. 7, 8, Yes, sir. 9, Present, sir. 10, Yes, sir. 11, Yes, sir. 12, 13, Present, sir. 14, 15, Present, sir. 16, 17, Yes, sir. 18, Present, sir. 19, Yes, sir. 20, Yes, sir. 21, Yes, sir. 21, Yes, sir. 22, Yes, sir. 23, Yes, sir. 24, 25, 26. Yes, sir. Okay, सर so रोल नंबर 2 प्रेजेंट है Sir, आप उसकी 16 आवाज present. नहीं आई। roll number 2. यस सर श्वेता। ठीक है, Sir, 16 present. ठीक है. Okay, so we will continue this in the next class tomorrow. And MSc students, go through the assignments, try to solve them. ठीक है? Okay, sir. Okay.